asked me a question about twins. Right? So twins in humans are of two types: identical or non-identical. Identical or non-identical. The identical twins are paternal twins, whereas the non-identical ones are fraternal twins. Now see, the identical twin is produced by fusion of one ovum, one spermatozoa. It's one set of gametes. So one zygote is formed. इससे क्या बना? जाइगोट बन गया. जाइगोट से एम्ब्रियो बना. अब होता क्या है कि ये ब्लास्टुला से ब्लास्टुला वाली स्टेज पे स्प्लिट हो जाएगा. एट ब्लास्टुला स्टेज it splits into two. ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ह्यूमंस के केस में अगर ये गैस्ट्रुला पे जाके स्प्लिट होगा तो सिर्फ एक ही बेबी बनेगा और वो भी इनकम्प्लीट होगा. उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाएंगे. ब्लास्टुला स्टेज इट splits into two, resulting into two identical organisms. जिससे क्या होगा? आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे. आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स विल बी फॉर्म. ये जो आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे इनका जेंडर सेक्स भी सेम होगा, ऑफ द सेम सेक्स. टू सिस्टर्स, टू डॉटर्स और टू सन्स. Right. In this case, what happens? Ovum plus sperm and another ovum plus sperm. There are two sets of gametes. This ovum, let us suppose, came from left ovary. एक ओवरी से यूजुअली एक ही एग निकलता है. यूजुअली ये हो सकता है कि लेफ्ट से ही दोनों निकल जाए. ज्यादा कॉमन क्या होता है? एक लेफ्ट ओवरी से ओवम आया और एक राइट ओवरी से ओवम आया. ज्यादातर ये होता है. अब ये हो गया. ठीक है. अब क्या हुआ? अब इससे एक इंडिविजुअल बना और इससे एक इंडिविजुअल बना. ये दोनों फीमेल्स हो सकती हैं और दोनों मेल्स हो सकते हैं और एक फीमेल और एक मेल हो सकता है. राइट. ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं. ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टू जाइगोट्स, टू इंडिपेंडेंट जाइगोट्स वर फॉर्म्ड. टू डिफरेंट जाइगोट्स वर फॉर्म्ड. ये हो जाती है कभी कभी गड़बड़ियां, एरर्स यू कैन से. टू डिफरेंट जाइगोट्स आर फॉर्म्ड. It's not just two zygotes, right? Not just two, sometimes four. The highest number that I've heard is about eight young ones produced by a lady at a single time. When this happens, there's a phenomena. If from a single ovary more than one ovum is released, if from one ovary more than one ovum is released, the phenomena is called, this case is superovulation. This is superovulation. ठीक है, क्लियर हुआ? दो तरह के ट्विन्स होते हैं, आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल. यस सर. चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे कंटिन्यू करते हैं.
the last phase that we studied about the menstrual cycle is the bleeding phase, the menstrual phase. This is not the last phase of the menstrual cycle. This is the last or the third phase of the uterine cycle. Right. Now, if we study the reproductive cycles as if we are talking about the menstrual cycle, the menstrual cycle is from one bleeding to another. From one bleeding phase to another. Hence, the first phase would be menstrual phase. सबसे पहला phase क्या लिखोगे आप? Menstrual phase, which is now followed by the next phase, that is the proliferative phase, and then the third phase of the menstrual cycle, which is the secretory phase. The secretory phase. Proliferative phase corresponds with the follicular and ovulatory phase. Follicular and ovulatory phases. But follicular phase and ovulatory phase are the phases of ovarian cycle. The secretory phase corresponds to the luteal phase of ovarian cycle again. These two are the phases of ovarian cycles. In this cycle, on 14th day, 10th to 14th day, ovulation occurs. Ovulation occurs. इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? Menstrual cycle. The beginning of menstrual cycles is known as menarche. 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 जब लाइफ में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? menarche. The end of menstrual cycle, because it is not a complete stoppage. The end नहीं होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, and then it finally ends. So this end is actually a decrease in the rate, fall in the rate, which is known as menopause. This is not meno end. This is menopause. For increasing periods of time, there is no menstrual cycle. Let us suppose in the healthy human female, in healthy or normal human female, the number is around 8 to 10. In healthy or normal human female, the number can be as less as 8 to 10 cycles. 8 to 10 cycles. ये जरूरी नहीं है हम each month करते होते हैं, because जरूरी नहीं है कि एक पूरे साल में 12 menstrual cycles हों. If the number is 8 to 10, even then the female is normal. There's no problem at all. No gynecological problem.
In healthy or normal human female, 8 to 10 cycles are there, right? A fall below 6 is abnormal. Is abnormal. अगर मेडिसिन की लैंग्वेज में बोले, ये बोल दिया जाता है कि एक ब्लीडिंग फेज और दूसरी ब्लीडिंग फेज के बीच में अगर अराउंड 2 months का गैप है, then it is a case of abnormality. Menstrual cycles could be delayed by 6 days, 7 days, 8 days, 10 days. This is normal. बहुत सारे factors होते हैं, nutritional state, iron content. There are many factors which actually help in the normal reproductive life of the female, reproductive functioning of the female. Right? This is about the menstrual cycle. We have completed gametogenesis. We have completed reproductive organs. We studied about fertilization, implantation. We have completed menstrual cycle. Right? Yes. Hypothalamus, which is a part of nervous system, it has got a positive effect on anterior pituitary. Hence, the anterior pituitary releases gonadotropins. The example of gonadotropins are FSH and LH. FSH and LH. These hormones, as per their turn, they would affect the ovary. If the ovary is functioning properly, then there would be suitable changes, appropriate changes in the uterus. Uterine cycle would be perfectly all right. And hence, menstrual cycle would be there at regular intervals. Now, if this axis is disturbed, if something happens in this area, you see hypothalamus, a part of nervous system, right? It is a part of limbic system actually. A part of limbic system, LIMBIC. It has nothing to do with forelimbs and hind limbs. Limbus in Greek language means ring. LIMBUS. Limbus means ring. ये ब्रेन में एक ऐसा एरिया है जो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के अराउंड है. अगर आप ब्रेन को नीचे से ऊपर की तरफ देखो, ये जैसे मान लीजिए सेरिब्रम है, ठीक है, तो क्या सेरिब्रम, यहाँ से नीचे की तरफ अभी प्लेन चेंज हो जाता है. दिस इज इन वन प्लेन. यहाँ से एक स्टॉक नीचे को निकलती है. आप जो ब्रेन का डायग्राम बनाते हो या देखते हो तो कुछ इस तरह का बनाते हो आप. दिस इज द ब्रेन एंड फ्रॉम दिस अराइजेस द स्टॉक. यहाँ से ये पीछे को ये स्टॉक निकलती होती है. इस जगह पर आप सेरिबेलम बनाते हो. यहाँ सेरिबेलम होता है. ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन का पार्ट मान लो. ये मिड ब्रेन का पार्ट. दिस इज द फोर ब्रेन. इस ये मिड ब्रेन और ये जो हैंड ब्रेन है नीचे की तरफ, ये जहाँ जुड़ रहा है, ये यहाँ जुड़ रहा है, इसके चारों ओर ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली एक रिंग बनाते हैं, which forms the limbic system. Limbic system is related to emotions. It is related to emotions. The person is under stress. There is excessive influence of this, involvement of this region. There is stress, the person becomes emotional, sensitive. The hypothalamus actually would be more occupied in handling these emotions. So, there might be a hormonal imbalance in the body due to the stress, as the hypothalamus is busy in handling these emotions. Gonadotropins का नंबर का अमाउंट कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बहुत जो रिदम है वो खराब हो जाती है.
मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट आ जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज होती है फिनोमेना है जिसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया MENORRHOEA amenorrhea. This is no menstrual cycles occur, no menstrual cycles occur during lactation or milk secretion during lactation. एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन it suppresses the secretions of gonadotropins. ये FSH LH की secretion को FSH को specifically रोक देता है। Secretions of gonadotropins. This is the basis of lactational amenorrhea. ठीक है? अच्छा देखिए एक और चीज है, menstrual cycles do not occur in pregnancy or during pregnancy. Menstrual cycles do not occur during pregnancies. Right? This is due to increased estrogen and progesterone. Increased estrogens and progesterone. प्रेगनेंसी के टाइम पे दोनों हार्मोन्स रेगुलर अमाउंट से बढ़े हुए होते हैं। Increased estrogens and progesterone. This suppresses, ये FSH को suppress कर देगा, LH को suppress कर देगा। gonadotropins फिर रिलीज नहीं होंगे। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते। यहाँ तक सबने सारी स्लाइड्स नोट कर ली? दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दिस वाज अबाउट ट्विंस। This was about menstrual cycle, the menarche and the menopause. यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, menopause occurs between 42 to 45 years of age. Usually ये एवरेज है, between 42 to 45 years of age. There is a rapid decline in the rate of menstrual cycles per year. और तेजी से डिक्रीज हो जाती है। Next, the effect of stress. Hypothalamus, which is a part of limbic system, it acts as an intermediate. If there is stress, the hypothalamus would remain occupied for a very long time and would not be able to positively affect the anterior pituitary. इसके ऊपर effect नहीं आ पाएगा. Hence, the menstrual cycles would lose their regular intervals. There would be changes in the pattern. Lactational amenorrhea, जब तक lactation होता है, milk secretion होता है, तब तक menstrual cycles नहीं होती। ये किस हार्मोन की वजह से? This is because of the prolactin hormone. Prolactin hormone inhibits
gonadotropins, FSH, RH. Menstrual cycles do not occur in pregnancies as well. This is because of elevated levels of estrogens and progesterone. इनकी वजह से menstrual cycles नहीं होते. Now, during a discussion of menstrual cycle, we came across this hormone HCG. इसका full form हमने आपको बताया था. This is human chorionic gonadotropin. Right. Now, this is secreted by. It is secreted by syncytiotrophoblasts. SYNCYTIO. Syncytiotrophoblasts of the embryo. And let this be the surface of the uterus. And inside this is the blastula stage which has been implanted. What happens is around this clear boundary, there is a boundary in which it is difficult to determine from where, at which location, which area the maternal tissue is ending and the fetal tissue is starting. या बीच यहाँ आसपास कुछ ऐसा जोन क्रिएट हो जाता है स्कैटर्ड काइंड ऑफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट. आप ये चीज कह सकते हो कि ये जो पार्ट है एम्ब्रियो का, दिस पार्ट इज एक्चुअली फ्यूजिंग विद द मैटरनल टिश्यू. दिस रीजन इज द सिंचियो, SYNCYTIO. सिन मतलब फ्यूजन, साइट मतलब सेल, syncytiotrophoblasts. Trophoblast, if you remember, is the outermost layer of the embryo. Inside this clearly formed layer, made up of cells would be there, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट. इसके अंदर लेयर क्या है, ये रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है. साइटोट्रोफोब्लास्ट, this syncytiotrophoblasts, or you can say as implantation occurs, जैसे जैसे एम्ब्रियो वॉल के अंदर एम्बेड होना शुरू होता है, goes down, the syncytiotrophoblasts begins to produce HCG, human chorionic gonadotropin. HCG maintains corpus luteum. HCG maintains corpus luteum. इसकी वजह से कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है. इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है. अगर ये नहीं होगा, देयर इज नो HCG, नो CL. राइट. HCG is formed only during pregnancy. Formed only during pregnancy. Now there's one more thing. This is chorionic. This is chorionic. एम्ब्रियो का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं कोरियन. ये है क्या चीज? The fetus, as the embryo grows into fetus, the fetus is covered by or supported by four membranes. Four membranes.
4 मेम्ब्रेन्स होती हैं फीटस के ऊपर. One is chorion, second is allantois, the third is amnion, and the fourth is the yolk sac. The yolk sac. ये 4 मेम्ब्रेन्स. इनके फंक्शन पढ़ते हैं फिर. Functions or the role of these fetal membranes. The first one is the chorion. The chorion forms the placenta. It forms placenta. It's a physiological connection. Physiological connection. It's for a purpose. Connection between mother and fetus. मदर और फीटस के बीच में एक फंक्शनल कनेक्शन है, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लासेंटा. ये प्लासेंटा बनाता कौन है? कोरियन. फंक्शन इज न्यूट्रिशन, respiration, nutrition, respiration, and excretion. The second is allantois. Allantois is respiratory. It forms umbilical cord. It forms the umbilicus. Umbilicus या umbilical cord. Right. Now this cord is formed to meet the increased requirement of respiration. So allantois अब काम क्या हो जाता है? It supports the fetus by providing increased surface area for gaseous exchange. It is respiratory. Now there is a very strange thing. It is also known as, allantois is also known as the urinary bladder. The urinary bladder of fetus. इसको हम urinary bladder भी बोलते हैं. As it can remove and store, as it removes and stores urea from fetus for gradual elimination. For gradual elimination. धीरे धीरे ये यूरिया रिलीज होता रहता है, मदर की ब्लड में आता रहता है, पर एक बार इसको बहुत तेजी से फीटस से रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज इट वुड क्रिएट टॉक्सिसिटी. इसलिए इसे यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर्स यूरिन, रिमेंबर. द थर्ड इज द एमनियन, शॉक एब्जॉर्बर. एमनियन इज शॉक एब्जॉर्बर. इसमें एक फ्लूइड होता है, it has watery fluid. Watery fluid.
in which the embryo floats, in which the fetus floats. fetus के चारों ओर होती है एम्नियन, और fetus इसके अंदर होता है, एक तरह से तैर रहा होता है. The fetus can drink this fluid. ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो fetus इस fluid को drink भी करता है. It is watery fluid in which the fetus floats. It breaks just before parturition. It breaks just before parturition. जिसको वाटर बर्स्ट भी बोलते हैं. It is shock absorber. It is found only in terrestrial animals. It is found only in land vertebrates. Land vertebrates. Fishes amphibians में एब्सेंट होता है, और इन वर्टिब्रेट्स को, ये वर्टिब्रेट्स जो कि लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? एमनियोट्स. वर्टिब्रेट्स हैविंग एमनियोट. तो योग सैक भी इधर ही बोल देते हैं. योग सैक इज हीमोपोएटिक. ये ब्लड बनाता है. हीमोपोएटिक. It forms blood. In humans. This is for humans. ठीक है.